Okay, guys. Good morning. Welcome to another class for media regulations, and we would be talking about social media regulations. And the topic we are going to specifically talk about today and explore is: can the law effectively regulate social media, and should it? We are going to explore different aspects. This is very critical, and you should know that we are trying to get maximum knowledge and research and discussion regarding social media. No matter, we may have to write even like maybe half a page in exam, but this knowledge and discussion will provide us a very good and solid base to talk about in exam with respect to the question, because question would be unpredictable in exams, but our research will help us out to tackle all those unpredictable questions. So let's begin. I have tried to make this handout because it's little lengthy. It's like eight paged handout. I have added some images so that you may not feel bored and you would like to read it as well. So over the past decade, the emergence of social media has spread around the world, becoming an internal part of our everyday life. Social media platforms like Facebook, Google, Twitter, YouTube transform the way we see, receive, and share information. However, it could be argued that in its emergence has altered and unheard a new dynamic between the law and spread of information, raising a lot of ethical and legal concerns. You know that uh, you cannot publish anything on a newspaper or on a magazine or especially on these two platforms or even on radio and TV without investigation, without check and balance. You cannot make anything viral. You cannot easily defame somebody on false reasons or false claims, but it is possible in social media. That is why law should be changed, but there are challenges because on one hand social media is not regional, it's international. Number two, uh, the audience, the international audience can commit a crime, uh, a thing which is considered as a crime in your country, or a post can, you know, disturb your people because it may not be suitable with your values and social, norms. So it is very complicated situation. I hope you are getting it. Okay, for example, yesterday I came to know about a news that uh, one of the politicians in Britain, the newspaper called Daily Mail, which is very famous and reputable, they have published a news regarding our ex chief minister's son-in-law, and obviously they must have done some research because in Britain they are mentally prepared that there could be a backfire. But the victim or the culprit or the suspect, who whatever you call it, the son-in-law of our ex-chief minister, has decided to file a case for heavy fine to that, towards that, or against that newspaper agency. So this is a global world, and that is why to control things on social media is, it's not an easy thing. And let me tell you one more thing before moving on. In Pakistan, they are going to implement strict social media regulations, especially regarding blasphemy and terrorism and anti-governmental things. And Pakistan government is forcing these social media companies, including Facebook, Twitter, and Google, to make their regional offices in Pakistan, in Islamabad as well, so that if they find something bad about those companies' acts, so they could be called to government offices, maybe PTA and PI, Pakistan Internet Exchange, and a process of a fine or anything could be started. But Facebook and Google are very resisting, and they are saying that they have no plans to open, and if government will force them, then they may stop their services in our country. तो गवर्नमेंट तो बाद में रोके या ना रोके, वो कह रहे हैं हम खुद से रोक देंगे. बट इंडिया में उनके ऑफिस है, लेकिन हम इससे कंपेयर नहीं करते, हम जेलस नहीं हो सकते. इंडिया इज अ वेरी बिग इकोनॉमी. वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहाँ के इंटरनेट यूजर्स बहुत ज्यादा हैं. So that is, but it's a different discussion, but it is related to regulations. Anyways, in the wake of social media crisis all over the world, crisis situation तो है. ब्रिटेन भी परेशान है, यूरोप भी परेशान है, अमेरिका भी परेशान है,
मिडिल ईस्ट तो पहले से ही परेशान था और उन्होंने काफी हद तक उसको कंट्रोल किया हुआ है। चाइना, कोरिया वगैरह के सोशल मीडिया, दे शुड बी अ लिमिट, ठीक है। गवर्नमेंट को अपने थ्रेट्स हैं, लेकिन जो सोसाइटी है उसको थ्रेट्स हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे बहुत सी वायलेशंस भी हो रही हैं, बैड चीजें भी हो रही हैं। यू मस्ट हैव रिमेंबर द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड मॉस्क शूटिंग, जिसमें द द सस्पेक्ट, द क्रिमिनल went live on Facebook while shooting and killing innocent people, innocent Muslims rather. So there should be a mechanism using machine learning or artificial intelligence, or maybe human beings there at the Facebook offices, and who should be there to stop such a content. And it is extremely difficult, since I know much about computers, and those of you who know कि artificial intelligence चीज है वो बहुत कुछ कर सकती है, but real time तो impossible है। but still ऐसे content को, ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ के बिलियंस ऑफ पोस्ट एवरीडे होती हैं, इनको मैनेज करना काफी मुश्किल है। लेट मी कंप्लीट, फिर मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। यूरोप में, सॉरी जर्मनी में रूल बनाया, और हम इस हैंडआउट में शायद देखेंगे भी कि विद इन 24 आवर्स उन्होंने मार्जिन दिया है कंपनीज को कि कोई ऐसा पोस्ट आता है जो कि जर्मन लॉज के खिलाफ है, तो विद इन 24 आवर्स अगर वो पोस्ट रिमूव नहीं होती तो फिर दे विल बी अ वेरी aggressive fine against that social media company, और ये रूल इट्स गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। अभी ये रूल उन्होंने ड्राफ्ट कर लिया है, इम्प्लीमेंट अभी होने को है। तो यू कैन से कि देयर इज अ रूल, अ लॉ, या इम्प्लीमेंट किया तो हो गया, इट डज नॉट काउंट एट ऑल। ब्रिटेन का भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो आप नहीं बोलोगे। ऑफकॉम इज वर्किंग ऑन इट बिकॉज इट्स नॉट ईजी। गवर्नमेंट अब ब्लेम सोशल मीडिया कंपनी में डाल रही है, सोशल मीडिया कंपनीज आर ब्लेमिंग द पीपल, ठीक है। ये वैसे ही है कि आप लीथल वेपन्स बनाते हो और आप कहते हो कि हम सेल तो करेंगे, लेकिन हमारा जो कंज्यूमर है फायर ना करे, वो क्रिमिनल एक्टिविटी ना करे, वेपन्स हम सेल करते रहेंगे। तो इट मीन्स कि वेपन मैन्युफैक्चरर्स पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो कोई ऐसा लॉक लगाएं कि वो एक्सीडेंटली भी ना चले, और अगर वो चले तो देयर शुड बी एन ऑप्शन टू ट्रेस दैट पीपल और टू स्टॉप दैट पर्सन, स्टफ लाइक दैट। Since it's video recording going on and we are left with last few minutes, so I won't be able to take your questions, but you can ask your question or share questions via WhatsApp. Well, in the wake of media crisis, like we were talking, it's a worldwide crisis. Some people even argue. Acha, Zawar was online. Okay, I'm going to add that down. Okay, getting back. Okay, some people argue that the law is not adequately equipped in curbing the surge of social media and its implications on communication and safety. ठीक है, this is fact कि लॉ इतना भी capable नहीं हुआ, change की ज़रूरत है। Social media has raised a lot of concerns such as people's loss of privacy. आपको पता है आपके फेक अकाउंट्स बनते हैं, आपकी अच्छा फेक अकाउंट्स की प्राइवेसी तो एक एक्सट्रीम केस है ना। ये जो सोशल मीडिया कंपनीज आपका डेटा सेल करती हैं कंपनीज को, आपसे बस वो 4-5 क्लिक करवाती हैं कि आपका नेम, आपकी पब्लिक प्रोफाइल हम शेयर करेंगे, but this is loss of privacy. The rising era of cybercrime, cyberbullying, and terrorism and threats to the structure of democracy, ये काम अब शुरू हो गया है। फैजान को मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ, कभी फैजान चला जाता है, कभी जवार चला जाता है, कभी कोई चला जाता है। Anyways, getting back, well, they contend that social media is a form of media outlet and just like any other media avenue, it should be regulated by the law. जैसे मीडिया कंपनीज है, रेडियो स्टेशन है, वो भी तो मीडिया है ना, तो अगर वो रेगुलेट होते तो ये रेगुलेट क्यों नहीं हो सकता? Others would reason against this and believe it is pointless for the government to try and regulate social media, and instead it should be up to the social media platforms to take up the responsibility themselves and individuals who use the platform. Majorly social media companies यही कह के जान छुड़वा रहे थे कि इंडिविजुअल्स का काम है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम सेल्फ रेगुलेशन कर लेते हैं, हम अपनी मैक्सिमम कोशिश कर लेते हैं, और इन्होंने की भी है। यूट्यूब भी एवरी वीक मिलियंस ऑफ वीडियोस को डाउन करता है, रिमूव करता है, जिसमें वायलेशन होती है कॉपीराइट की, प्लेजरिज्म होती है, या कोई टेररिज्म या कोई बैड कंटेंट होता है, वो रिमूव करते हैं। तो अपनी तरफ से सेल्फ रेगुलेशन कर तो रहे हैं, बट स्टिल देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड गवर्नमेंट बिलीव्स कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, ठीक है। Some regulation and the enforcement of existing legislation is necessary.
to strike the balance between promoting free speech and protecting public interest. आपको पता है लाइफ में बैलेंस जरूरी है, आप किसी चीज को भी खुली छूट नहीं दे सकते हो. However, there should still be a distinction between government and its interference with activities on social media. ऐसा भी ना हो कि जो चाइना में और नॉर्थ कोरिया में हो रहा है कि हर चीज पे गवर्नमेंट पकड़ रही है, मना कर रही है. देयर शुड बी अ बैलेंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन उसके नाम पर आप पब्लिक ऑर्डर मुल्क में खराब ना करें. द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टैकल इन दिस कॉनंडम. कॉनंड्रम पता क्या होता है? कॉनंड्रम होता है एक ऐसा इशू जो बहुत मुश्किल हो सॉल्व करना, विच इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स. ठीक है, कॉनंड्रम इसको बोलते हैं. एंड सोशल मीडिया वाला इशू है भी कॉनंड्रम में, एक्सट्रीमली ट्रिकी टू हैंडल. ज्यादा अगर रेगुलेशन लगाएंगे तो फ्री स्पीच अफेक्ट हो जाएगी, ज्यादा छूट देंगे तो फिर साइबर क्राइम्स होने लग जाएंगे. तो इस वजह से वी आर गोइंग टू डिस्कस क्या शुड देयर बी अ रेगुलेशन लॉ फॉर सोशल मीडिया. The biggest issue surrounding, we are just going to wrap up till here, ठीक है? The biggest issue surrounding government regulation of social media is the restriction of free speech and freedom of expression. Most democratic countries have legal structures in place that protects their citizens' right to freedom of expression. For example, UK में there's an Article 8, it's very famous, that is incorporated in Human Rights Act that states that everyone has the right to freedom of expression without interference by public authority, यानी गवर्नमेंट की. यहाँ पे वन का मतलब विकीपीडिया वाला वन नहीं है. वन का मतलब है कि नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इसको फर्दर वहां से रिसर्च कर सकते हो कि आर्टिकल 8 में और क्या क्या है. यू कैन गो फॉर इट. नीचे इसी डॉक्यूमेंट में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं. इन द यूएस, आप यूएस और यूके का जरूर पता होना चाहिए आपको. इन द यूएस द फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्ट्स पीपल्स राइट टू स्पीच, फ्री स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. देयरफॉर इस वजह से यूएस में आप प्रेसिडेंट को गाली भी दे सकते, विच इज एक्सट्रीमली बैड. बट इस हरकत में आपको वो जेल में नहीं डाल सकते, पुलिस आपको पकड़ के साइड पे कर सकती है थोड़ी देर के लिए, बट बिकॉज दे कैन नॉट पुट यू इन बिहाइंड बार्स, बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां पे उन्होंने राइट दिया हुआ है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लास्फेमी करो, किसी को हर्ट करो, किसी रिलीजन को या किसी रेस को टारगेट करो. देयरफॉर इट कैन बी आर्ग्यूड दैट द लॉ एंड द गवर्नमेंट regulating social media would be a backward step. वो समझते हैं कि हम आगे हैं और हमने जो फर्स्ट अमेंडमेंट करा यूएस में, ये हमारी एक मॉडर्नाइजेशन का पहला कदम है. लेकिन नाउ पीपल आर सेइंग इट्स अ बैकवर्ड स्टेप इन आवर फाइट फॉर डेमोक्रेसी एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी. यहाँ पे हम पॉज कर रहे हैं और we will resume from here in the next lesson.